बिजनेस में विमेन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बिकॉज अपने आप में ये जो टर्म है उसके साथ बिजनेस मैन लगा हुआ है, तो विमेन को एसोसिएट करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है. बट इट्स अ बिजनेस, एनीबडी कैन रन. लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जॉब की, बट फादर ने जो बिजनेस सेटअप किया था इतने स्ट्रगल के बाद, और उससे मुझे आगे बढ़ाना था. माझे शिक्षण MSc फिजिक्स झाल्यानंतर या क्षेत्रामध्ये येण्याच्या अगोदर मला टीचिंग फील्डमध्ये जायचं होतं, पण आमच्या मामांनी सांगितले का स्वतःचा बिझनेस छोटा असला तरी चालेल, पण तो स्वतःचा असावा. So there is a massive gap when it comes to access to finance for micro, small and medium enterprises. This is of the tune of $520 billion by some estimates in India alone. Wherever there's a gap and you have a product that can solve and service that gap, you have an opportunity to capture, which leads to progress. So in India, if you see distribution structure, right, the distribution channel, there are micro enterprises which are part of this channel and are able to provide access to essential products to the last mile. But when it comes to distribution of credit, it remains to be an unsolved problem. Overall, the MSME segment contributes to 30% to India's GDP, as we all know. 90% of these micro and small enterprises do not have access to any kind of formal credit. Currently, the retail economy in India stands at around $1 trillion, growing at 10 to 15% nominally every year. And banks and financial institutions have reach only till major cities. In tier 2, 3, 4 India, their reach is much more limited. And the B2B, some estimates say that the B2B lending market has a gap of around $250 billion. There are structural issues both on the demand and the supply side. If I talk about the supply side issues, traditional financial institutions and banks find it difficult to be able to cater to this customer segment and their financial needs simply because they don't have the right kind of data, documentation, or tangible assets to provide as collaterals. On the demand side, if you look at it, these customers are a part of an informal credit economy often. Specifically, if I talk about the trading MSMEs, the shopkeeper segment that we are working with, also because they do not have the right kind of digitization or technology service to be able to formally and structurally work their businesses better. As we look at it, is not only a credit problem when we talk about MSMEs, it's more of a business problem. And that's a massive gap that we are trying to bridge. मित्रांनो, भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. भारतामधील जे द्राक्ष शेती होते त्यापैकी 80% शेती द्राक्ष शेती ही फक्त महाराष्ट्रात होते. 75% द्राक्ष शेती ही फक्त आणि फक्त आपल्या नाशिक जिल्ह्यात होते. हमने 2004 में धनंजय कृषि एजेंसी नाम से दुकान का शुरुआत किया. आमच्याकडे सरासरी 1700 फार्मरचा डाटा होता. 1700 शेतकरी आमच्याकडून औषध घेतात. त्याचप्रमाणे 510 दुकानदार हे आमच्याकडून रिटेलर्स आमच्याकडून औषध घेतात. तो दोस्तों, मैंने शुरुआत से देखा कि उस टाइम साहूकारी पद्धत ज्यादा थी. लोगों को जो पीक उपजना है उनके लिए पैसा लगता था. वो पैसा वो साहूकार के पास जाते थे, सोना गिरवी रख के उनसे पैसा लेते थे. बाद में पीक निकलने के बाद वो पैसा भर के ऐसा दिनक्रम चलता था उनका. ज्यावेळेस पूर्ण सीझन चालू असायचा, शेवट सीझनच्या शेवट आम्हाला माल देण्यासाठी बऱ्याच वेळेस दिक्कत येऊन जायची.
पेमेंट ब्लॉक झाल्यामुळे आम्हाला मटेरियल येत नव्हतं आणि आम्ही ते शेतकऱ्यांना सर्व्हिस देऊ शकत नव्हतो. आमच्या रिटेलरला उत्कृष्ट प्रकारची आम्ही सर्व्हिस देऊ शकत नव्हतो. तो बाद में हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐसा बताया कि आप प्रोकैप के साथ काम करो, आपका दुकानदारी बदल जाएगा. त्या चर्चेतून असं आम्हाला समजलं की प्रोकॅप हे काय आहे आणि आम्ही प्रोकॅपची कशी मदत घेऊ शकतो. तो प्रोकैप अभी ऐसा करता है कि 4 महीने या 5 महीने के लिए जैसा ही जरूरत हो वैसे फार्मर को वो भांडवल प्रोवाइड करता है, मैंने पैसा प्रोवाइड करता है. तो बैंक के ब्याज दर से जो पैसा मिलता है उस हिसाब से फार्मर का भी हार्वेस्टिंग हो जाता है, उनका मुनाफा भी बढ़ता है, प्रोकैप को भी पैसा टाइम टू टाइम वापस जाता है. आज प्रोकॅपच्या मदतीने आमचे 1710 शेतकऱ्यांवरून आम्ही 2206 शेतकऱ्यांपर्यंत 24x7 आम्हाला वेळोवेळी फायनान्स उपलब्ध झाला आणि त्या पैशातून आम्ही कंपन्यांना ॲडव्हान्स पण देऊ लागलो. त्यातून आम्हाला चांगल्या प्रकारचं शेतकऱ्यांना पण सर्व्हिस देता आली. हमको जो औषधि लगती है अंगूर के लिए, उसमें उससे जो भी औषधियाँ लगती है वो हम धनंजय कृषि एजेंसी लासलगांव में उधर से हम खरीदी करते हैं. थोड़ा अगर पैसा अगर कम ज़्यादा होगा, कम नहीं हो भी होगा तो हमको तो संभाल लेते हैं. आमच्या जे रिटेलर बंधू आहे त्यांना पण प्रोकॅपची चांगली सर्व्हिस देता आल्यामुळे तर त्यांनाही वेळेवरती जो फायनान्स उपलब्ध झाला तर त्यांनाही खूप चांगल्या प्रकारच्या आणि चांगल्या रेटमध्ये उच्च दर्जाचे औषधं त्यांना देता आले. I also have been personally a beneficiary of credit, and I completely understood the importance of how credit can shift the orbit for a customer or for an individual or a business and put them on a growth trajectory which would have otherwise not been possible. Hence, we started to discuss how to create a product that can address the SME financing problem at scale. So we would in a way leverage the network these corporates have and extend small credit to wholesalers and SMEs spread across the country. And around this similar time, we also saw consumer financing take shape when NBFCs and lending entities used the corporate infra to go directly to retailers and check out and order products and offer products to consumers to buy their products. So here was at one end a wholesaler, at the other end a consumer, but between the two there's a shopkeeper, and that was still traditional. And at Progcap, we thought, why can't we take that approach that was being taken of corporate-led distributor financing to the next layer, that is a retailer. बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे की काफ़ी अहमियत रहती है, जो कि पैसा मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकता आज की तारीख में. मेरा बिजनेस स्टार्ट मैंने 1984 में किया था. 84 में मैंने सर्विस की और 85 में अपना बिजनेस चालू कर दिया था. 2011 में मैंने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने उनका स्ट्रगल देखा है. जो 15 साल तक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, उनमें काफ़ी स्ट्रगल किया. मेरे बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, जहाँ पे हमने काफ़ी कंपनीज के साथ इन्वॉल्वमेंट दिया. कंपनीज से जब हम लोग जुड़ते हैं तो हमें फंडिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें स्टॉक की अवेलेबिलिटी रखनी पड़ती है हमारे पास, और उतनी कैपिटल हमारे पास उस टाइम पे सस्टेन नहीं हो रही थी कि हम लोग अच्छी ग्रोथ कर पाएं. इसी दौरान 2018 में ओरिएंट फैंस हैं जो वसुंधरा इंटरनेशनल, उन्होंने हमें प्रोकैप से मिलाया, जिन्होंने हमें एक अच्छी क्रेडिबिलिटी दी, क्योंकि जो क्रेडिट लिमिट हमें प्रोकैप से मिली उससे हमने हमारा स्टॉक बढ़ाया. रोटेशन, मनी रोटेशन अच्छे से हो रहा था, फंडिंग का रोटेशन हो रहा था. उस क्रेडिबिलिटी के बाद इन 6 सालों में 2018 से 24 तक हम लोग ने जो सेल था उसमें कम से कम 100 टाइम्स हम लोग ने ग्रोथ किया है. We have training centers where our teams are constantly engaged with these customers, helping them to get into a good repayment behavior, helping them train on the mobile app, and also provide other value-added services such as Udyam Aadhaar, which allows them to avail a lot of benefits beyond credit. One of the core things which has been really beneficial for the customers beyond credit is that they have now become a part of digital economy and they are able to access credit on their own terms flexibly, but also are able to digitally do this in a much more empowered way.
So our customers are largely from low-income groups, 90% of them residing in tier 3 cities and below. And most of these customers had never borrowed before. So to get to them, you have to create trusted ecosystem, which distributors and corporates which are known to them are helping us create. SLMG is the first bottler of Coca-Cola in India since 1993 that is going beyond just urban markets. You know, we operate in Uttar Pradesh, and from February, we expand into the region of Bihar. हाई सीजनल मार्केट है बेवरेज इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे गर्मियों में एकदम से बहुत ज़्यादा सेल बढ़ती है और ऑफ सीजन में या सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वो कम हो जाती है काफ़ी। तो डिस्ट्रीब्यूटर को उस समय जब सीजन में कुछ 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है तो वो अपने पास से नहीं कर पाता है। तो प्रॉकैप हमें उस जगह हेल्प कर रहा है कि उनको कम लेंडिंग रेट पे, कम इंटरेस्ट पे हम लोग उसके साथ पार्टनर कर रहे हैं, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा आरओआई, बेटर आरओआई मिल पा रही है और हमारे इन्वेंट्री लेवल रूरल में उस टाइम पे बढ़ जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा सेल कर पाता है। तो हमारी सेल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉकैप के इन्वेस्टमेंट की वजह से। Our model at SLMG is a very simple combination of growth, investment, and building capabilities. And here is where Progcap is coming into play, and here is how we need to collaborate together to empower and to capture all the growth in the rural markets. FRCL has empowered millions of customers to be able to grow their businesses using the power of flexible financing. This has enabled them to expand their offerings, manage their inventory efficiently, and become a significant contributor to the overall economy. मेरा नाम ईशा जयसिंघानी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे फादर इन लॉ का होलसेल का बिजनेस है फ्रॉम पास्ट 20 years. लेटर आफ्टर कोविड आई रियलाइज कि इस बिज़नेस में काफ़ी पोटेंशियल है FMCG प्रोडक्ट्स में, तो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ गो। तो किसी भी एजेंसी के साथ जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली होता यह है कि हम एक कैपिटल अमाउंट डालते हैं बिजनेस में और फिर वो गुड्स हमें भेजते हैं, हम उसको मार्केट में सेल ऑफ करते हैं एंड देन जो कलेक्शन आती है हम उसे अगेन बिजनेस में यूज़ करते हैं। आपके पास रोटेशन के लिए जो मनी है वो कम हो जाता है, बट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक तो आपको रखना ही है। तो मुझे एक बिकानो के सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझसे प्रॉकैप को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक क्रेडिट लाइन देंगे फॉर सो एंड सो पीरियड, एंड आई वॉज वंडरिंग कि यार ऐसे कोई मुझे फ्री में पैसा क्यों देगा, व्हाट्स द कैच इन इट। आई थॉट कि यार चलो लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी क्या है ये। So one of the representative, he called me and he explained me that how Progcap works. Then he asked me about few documents like GST, 6 months की statement, Aadhaar card, PAN card, and all these details. I sent it to him, and later after around 10 days उन्होंने हमारा account खोल दिया Progcap में with Bicano. अब ये था कि हमें जितना भी स्टॉक चाहिए हम Progcap की क्रेडिट लाइन यूज़ करके उसे मंगा सकते हैं, एंड लेटर ऑन फिर इन अ डे और 2 जो भी हमारी लिमिट है उसमें वी कैन पे इट बैक पार्शली और फुली थ्रू द ऐप। अब एक ही ऐप पे मुझे डैशबोर्ड पे क्रेडिट लिमिट, रीपेमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, इस सब की ऑप्शंस मुझे एक ही ऐप पे पता चल जाती हैं। आफ्टर द यूज़ ऑफ फैसिलिटी ऑफ प्रॉकैप मैं डबल द इन्वेंट्री मेंटेन कर पाती हूँ। रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की संवाद विच इज़ डायलॉग, जहाँ पे कस्टमर्स कम टुगेदर, कस्टमर्स की बात को सुनना, उसको समझ के उनके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करना, जो जिस तरह का लर्निंग हमको उससे मिला, और जैसे हमने कस्टमर्स के साथ ही पार्टनरशिप कर उनके सुझाव को इम्प्लीमेंट किया। बहुत बार बहुत ब्रूटल फीडबैक होता है, समटाइम्स encouraging फीडबैक होता है, but overall what it helps us do is go back, work back on the product, solve one-on-one problems, but largely product related issues, जिससे कि constantly improvement होता है। So we've been partners with Himanshu, Pallavi, and the Progcap team for almost 5 years now. One of the things we found exciting was the innovative design of the product. The product mimics the interactions between the retailers and distributors in a very effective manner. Not just the transactions they do, but also the credit behavior and so on. It leverages technology to
underwrite these retailers effectively, to disperse capital. And finally, it has lots of safeguards built in the product from a risk standpoint in partnership with distributors and anchors, which enables them to grow the business with minimal credit losses. It's a wonderfully designed product, and that was part of the reason we chose to partner with them. Our vision is to work closely with the MSMEs and become their core operating system, not just in terms of financial services products, but in terms of technology and commerce. MSMEs की बहुत सारी needs होती हैं, business needs होती हैं, which don't get serviced right now. And at Progcap, we are solving them one by one. And our aim is to help them discover their true potential. I think we see our role not only as a financing services provider, but a significant contributor to the growth of micro and small enterprises. India, as we know, we are looking to achieve the status of a developed economy in the next few decades. I think we cannot do that by ignoring the Bharat. And therefore, we see at Progcap our role as a core contributor to that dream and vision.